नॉन क्रिकेट फैन भाई, जो भी यहाँ पर होंगे ना, सबसे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट मेरे को खेलनी आती होगी। आई एम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, आई मीन आई वाज, बट आई स्टिल बिलीव आई एम एंड आई एम गोना प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट इन कॉलेज, राइट। सो ये तो मत बोलो कि मैं क्रिकेट का फ़ैन नहीं हूँ। हाँ, आई मीन हाँ, बट यू नो देयर आर सम प्रायोरिटीज़। ये थोड़ी बूमर बातें लग रही होंगी, बट जस्ट रियलाइज़, अगर तुम आज 5 घंटे मैच देखते हो, या फिर पूरा दिन अगर तुम्हारे दिमाग में रहता है मैच के बारे में, और अगर 5 घंटे मतलब लगा लो कि तुम 3-4 घंटे अपनी प्रोडक्टिविटी लूज़ कर देते हो, तो जस्ट थिंक, तुम्हारी पेपर वाली सुबह, जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो, राइट। तुमको पेपर देने जाना है, तुम्हें पूरी रात से नींद नहीं आ रही, एंड डिसाइड कि चलो थोड़ी रिविजन मार लेते हैं, राइट, क्योंकि कौन ही सोएगा भाई पेपर से पहले। सोना तो चाहिए बट सोता तो है नहीं कोई, राइट। सो यू थिंक कि हाँ थोड़ी रिविजन मार लेते हैं, एंड यू कीप लुकिंग एट द क्लॉक आफ्टर एवरी मिनट, बट आफ्टर एवरी मिनट लाइक 30 minutes seem to pass. Time is passing so quickly, like so freaking quickly, like you think that it's just been a minute that you've been sitting on a desk, but it's been 30 minutes when you look at the clock, right? 30 minutes pass, it's like 4 a.m., then 30 minutes pass, 4:30, 5 a.m., 6:30, 7 a.m. 7 a.m., you're not even feeling sleepy. You haven't slept for like 30 hours, 40 hours or something, and you aren't feeling like the slightest bit of sleepiness. Then at like 8 a.m. ish, you finally decide that you no longer have any time because you got to leave to get to the center at time, right? 7 a.m. Most probably. So at that time, just think, if someone offers you 5 more hours of revision, 5 more hours of revision, just imagine. और अगर फाइनल फाइनल तो सभी देखेंगे देखेंगे, आई एम डैम श्योर। जितने भी, अगर इफ 100 एस्पिरेंट्स आर गोइंग टू अपीयर फॉर जेई, 80%, 70% लगा लो, मिनिमम 70% विल वॉच द फुल फाइनल, राइट, इफ इंडिया गोज टू द फाइनल, विच यू कैन होप इट डज, राइट। सो लेट्स अज्यूम लाइक आधा दिन कॉज ओडीआई, 2 ओडीआई मैचेस, आधा दिन तो लगा ही लो। आधा दिन तुमको कोई बोले कि तुम्हारा पेपर आज सुबह की जगह शाम को होगा और पढ़ लो जितना पढ़, तो तुम उस टाइम पे मैच की हाइलाइट्स देखोगे, मैच देखोगे कि नेक्स्ट मैच कब है इंडिया का, फाइनल की क्लिप्स देखोगे, या फिर यू गो ऑल आउट एंड जस्ट स्टडी हार्ड, राइट। नो मैटर हाउ बिग ऑफ अ क्रिकेटिंग फैन यू आर, वो जो है ना, वो जो सचिन का जो फैन है और जो धोनी का फैन है, जो हु हैज अटेंडेड एवरी सिंगल मैच सिंस लाइक धोनी हैज स्टार्टेड प्लेइंग, और सिंस धोनी हैज बिकम फेमस, तो काफ़ी फेमस बंदा है। ऑल्सो हैव सम स्नैप्स विद हिम, उसके साइड वाली सीट थी हमारी पवेलियन में, व्हेन आई वाज अ बॉल बॉय इन द वर्ल्ड कप, राइट। सो नॉट फ्लेक्सिंग, हाँ सबकॉन्शियस फ्लेक्स, बट यार समझ लो, हाँ कर रहा हूँ फ्लेक्स। अगर उसका जेई हो ना अगले दिन, और उसको मैच मिले कि हाँ, या मैच देख लिया, जेई के लिए रिवीजन कर ले, वो भी जेई के लिए रिवीजन करेगा भाई, या नीट के लिए, वट एवर, राइट। सो जस्ट इमेजिन कि ऐसा डायहार्ड फैन वो कर सकता है, तो तुम क्या चीज़ हो उसके सामने। एंड आई ऑब्वियसली बिलीव कि कैसी बड़बड़ कर रहा हूँ वैसे तो मैं, मतलब कहाँ से कहाँ बात घुमा दी। मैं कोई स्पोर्ट ही नहीं देखता, लुल, हाँ बढ़िया है भाई, है कर भाई, बहुत सही, गुलू गुलू, एकदम गुलू गुलू वाली बात करी, मेक सेंस, राइट, ट्रू, राइट, या। तो just keep in mind that from now on, every second, every minute, every hour, every day, every week, every month तो 2 ही बचे हैं, month खत्म, month 2 बार month, तो everything counts buddy। and मैं सर क्या आज देख रहा था, एक मोटिवेशन काफ़ी देखी मैंने रात को, मतलब वीडियोस पढ़ाई के साइड में, ऑब्वियसली नॉट सिर्फ वो देखते हुए। एंड सर सेड वन थिंग कि रिजल्ट, जस्ट ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, आना 2 सेकंड रुक जाए, लिखते 2 मिनट बाद रुक जाइए, ठीक है। एंड जस्ट लिसन टू दिस लाइन, रिजल्ट रिजल्ट वाले दिन नहीं आता, उस दिन से बहुत पहले आ चुका होता है, बस उस दिन सामने आ जाता है। रिजल्ट वाले दिन नहीं आता है, उस दिन से बहुत पहले आ चुका होता है, बस उस दिन आपके सामने आ जाता है। एंड ऑल दी जेई एस्पिरेंट्स दैट आर वाचिंग, कुछ तो देख ही रहेंगे, 2-3 फरवरी 12, 2024 को तुम्हारा रिजल्ट आ जाना है, राइट। तो तुम्हें क्या चाहिए कि फरवरी 12 को तुम्हारे सामने रिग्रेट के आंसू या खुशी के आंसू। डैम भाई, तो डीप हो गया भाई, रुला दोगे भाई तुम मेरे को भाई, राइट। तो जस्ट कीप इन माइंड गाइस कि क्या चाहिए तुमको 12 फरवरी 2024, और नीट वालों के लिए प्रॉब्ली सम डे इन में क्या चाहिए। डैम, मेरी आवाज़ थोड़ी है ना सिर्फ वेवर्स ही कर रही है भाई, शिट भाई। जस्ट इमेजिन लाइक एडवांस वाले दिन का रिजल्ट है, या फिर नीट वाले दिन का रिजल्ट है। मेंस के बाद तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स भी हैं, एंड ड्रॉपर लोग का सेकेंड अटैम्प्ट होगा। बट जस्ट इमेजिन मे, समवेयर अराउंड इन मे, और लास्ट जून का एक दिन है, सुबह सुबह न्यूज़ आ रही है कि आज रिजल्ट आ जाएगा,
and you're anxiously waiting कि कब result आएगा. You're sitting at a desk, parents तुम्हारे पीछे हैं या फिर तुमने अकेले देख रहे हो or whatever, and तुम wait कर रहे हो कि result आएगा, and then result comes, flashes on a screen. You've qualified for a dream college. You've got a seat in it. Suddenly you realize you don't have to sit on this desk anymore. Like, you don't have to sit on this desk anymore. No one will ask you to study. No one will say कि पढ़ ले. No one will say कि desk पे बैठ, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है. इस desk पे एटलीस्ट, जैसे मेरे लिए ये desk है, तुम्हारी कोई desk होगी जैसे तुम अभी बैठे होगे. Just laptop screen से बाहर देखो, just look at the wall. तुम्हारे सामने कुछ notes लगे होंगे, sticky notes लगे होंगे, कुछ चीज़ें याद करने की लगी होंगी जो तुम्हें इस टाइम पे बहुत टफ लग रही होंगी. But at that moment, it will all become irrelevant. It will all become irrelevant. Like after a couple of months, I'll just be staring here and it would have all become irrelevant, right? कुछ नहीं याद करना पड़ेगा. जितनी भी sheets लगी है सामने, उनको फेंक दो, उनको जला दो, उनको कुछ मर्जी कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा. Like no longer you have to stare at the periodic table that's stick in front of you every morning. No longer you have to wonder about attending daily lectures on a laptop or go to offline classes. No longer you have to worry about weekend tests. No longer you have to worry about any result. No longer you have to worry about scoring anything in any test. And in that moment, like, you'll be feeling nothing. ये जो होता है ना कि रिजल्ट देखते ही सभी लोग उछल पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं, या फिर ऐसे होते हैं, या तो वो ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता और रिजल्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ जाता है उनके हिसाब से, एंड या फिर वो होता है जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं जिनको पता ही निकल जाएगा. पर्सनली आई मीन लाइक नन ऑफ दीज, राइट. मुझे इतना भी पता नहीं है कि मतलब मेरा ये भी सीन नहीं है कि मेरा बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा, और मेरा ये भी सीन नहीं है कि मेरे को 100% हो जाएगा मेरा, एंड 100% आई विल बी एबल टू क्रैक इट एंड गो टू माई ड्रीम कॉलेज. दोनों में से कुछ भी नहीं है. एंड आई गेस मोस्टली पीपल दैट आर ओवर हियर राइट नाउ, बीच में आते हैं हम सभी लोग, राइट. ईदर वी कैन फेल और ईदर वी कैन विन. तो जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं, राइट, आई एम बीइंग रिलेटेबल राइट नाउ गाइस, तो एंजॉय इट व्हाइल इट लास्ट. हमारे जैसे जो लोग होते हैं, वी नो कि हमने मेहनत करी है, वी नो दैट वी डिजर्व इट, बट व्हेन द रिजल्ट फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल बी फीलिंग नथिंग. यू वोंट बी laughing out loud with joy, you won't be hugging your parents or anything. You'll be just sitting here numb, totally numb, right? Like, you will be so full of emotions, but at the same time you will be emotionless. You get what I'm saying, right? So many emotions flowing through your mind, through your body, but your brain will just be overloaded with which emotion to express first, right? Oh, and then let a couple of minutes pass, and then you'll finally start to feel happy. You'll feel worthy. You'll feel that you deserve this, and you feel that you accomplished some shit in the first time in your life. ये जो भी डांसिंग कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, पोइट्री कॉम्पिटिशन, हमारे स्कूल में तो शू पॉलिशिंग कॉम्पिटिशन भी होता था. जितने भी अवार्ड्स तुमने जीते हैं, जितनी भी तुमको प्रेजेस मिली है, तुम्हारे टीचर ने बोल दिया कि वाह बेटा क्वेश्चन कर दिया, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुमने चौड़ मार दी कि मैंने क्वेश्चन कर दिया, या किसी पार्टी में किसी लड़की ने तुमको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, या फिर तुमने बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर ली किसी पार्टी में एंड यू फीलिंग वेरी हैप्पी. एवरी सिंगल फकिंग थिंग विल बी overshadowed and overpowered at that moment, because that will be the most beautiful moment you experienced until now. Like, people ask me कि what's your best memory till date, like मतलब पूछते ना कि what's your favorite memory till date, and I have nothing to say to them, because each memory के साथ like most of the happy memories that I have, या तो वो ज़्यादा ही बचपन की होती है, या फिर they are with my friends when I'm enjoying with them, right? And each of those happy memories is followed by a sense of guilt, a sense of regret, a sense of disappointment for myself that I didn't do the work that I was supposed to do at that time, which was studying. But that moment, what I'll be feeling at that moment, it won't have a feeling of regret attached to it, because I know I gave it my all. I know I didn't hold back. I know that I outworked everyone. I outworked myself. I outworked the past Satvik. And I totally deserve this, right? That will be the happiest moment of my life until then. Yeah, and most probably happiest moment of my life, right? Yeah. Nah, buddy, nah. These aren't goosebumps, buddy. Real goosebumps you'll be feeling on that day when you accomplish
what you've aimed for, right? I was thinking that after this I'll follow up with a paragraph about what if we don't, right? A dark side, a dark side of the whole story कि अगर ना हुआ तो फिर हम दीवार पे देख के ये देख लेंगे कि अगले साल भी ये पढ़ना है या अब क्या, right? But I'm not gonna go down that path. I'm not gonna fucking go down that path. I'm not gonna imagine it. I'm I'm not gonna visualize it at all. I'm not gonna make you all visualize it because we need to be fearless at this time, right? We need to be fearless of the outcome, and we just need to believe that the best will happen to us. We don't even need to prepare for the worst, man. We don't even need to prepare for the worst. Just imagine yourself in this situation and you're already halfway there, right? Like self confidence. If you've got self confidence, you're halfway there, right? And it's just you that's pulling yourself down. Every decision that you make is a conscious decision, should be a conscious decision, right? Because every decision from now on counts. Every single decision. Like when you're getting up from the desk, that's a conscious decision. But scrolling your phone, like all those subconscious decisions, scrolling to the next reel, scrolling to the next reel, scrolling to the next shot, next story, next story, next story, talking to friends, calling other friends, asking them to party, meeting friends. All those are subconscious decisions. You got to convert them to conscious decision and realize what's best for me in this moment, right? What's what's my responsibility right now? What's my job right now? So that I can do that and accomplish that moment when I'll be staring here, feeling all those emotions, but still emotionless, right? So, gotta convert every subconscious decision into a conscious decision, which you make while knowing that if you do the wrong shit, if you take the wrong decision, that will directly impact the result. एकदम सीधा सीधा it will impact the result, right? बस जितने भी पास्ट के गलत कर्म हुए, जितने भी पास्ट की गद्दारी करी पढ़ाई के साथ, जितने भी पास्ट में झूठ बोले, जितने भी पास्ट में धोखा दिया पेरेंट्स को, अपने आप को, अपने टीचर्स को, सब माफ। आज से सब माफ, ठीक है? आज से T=0 सेट हो रहा है इस मोमेंट पे 5:07 ऑन 15th November 2023। आज से तुम लोग का, मेरा स्पेशली, T=0 सेट हो रहा है, राइट? इस मोमेंट के बाद कोई भी करी हुई गद्दारी, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, सोते हुए, जागते हुए, हगते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, खाते हुए, पीते हुए, वट एवर, subconscious, conscious, every decision will lead to consequences way, way, way worse than any consequences that you've dealt in the past or encountered in the past, right? So, yeah, guys, just get ready for that moment, right? Because that moment's about to fucking come real soon. Real soon. One snap and like 10 months pass and I'm sitting here looking at my result, looking at what I accomplished, right? It'll all be gone in a snap. Like just this, dude, like just this, like literally every single thing will be worth it. Every single sacrifice, every single sleepless night, every single lecture you solved, question you solved, sorry, my bad. Every single lecture you watched, every single DPP you solved, every PYQ that I would have done, every page of your notes that you've read, every line of short notes that you've written, every formula sheet you've made, every flashcard you've made, everything will be fucking worth it. Real, why? Real. Just absorb this moment, guys, right? Like, just absorb this. 5 minute बाद T=0 set कर लेंगे, but just absorb this right now. If anyone is feeling that they have got enough dose, they can just go and do their work. But like, I'd really appreciate if you sit along with me and just absorb this moment of, I know, I don't have any words for this because I've never felt anything like this before. This is not to, show off that I have a higher intellect, or I've like just, I know, I don't want to ruin this moment by saying some, high level shit. So let's just keep it basic, rudimentary. So you know what you want to do. You know how you should do it. You know when you should do it. You have the resources. You have the fucking time in the world. Like literally, I'm just gonna continue on that example that I said, that if you would have been given like a couple of hours or even a half a day that you would have wasted watching the World Cup and all that shit, if you had given half that day on the day of your exam, how much you would appreciate it. Now just think, someone offers you 2 months, 2 fucking months, like
you'll be spellbound. Like 2 months, you'll be thinking that I could like literally redo my 11th and 12th at that point, right? 2 months. And still you're wondering that are 2 months enough? उस मोमेंट पे सोचो कि 2 महीने कितने लगेंगे, कितने ज़्यादा बड़े लगेंगे, 2 साल से ज़्यादा बड़े लगेंगे 2 महीने। ऑन गॉड लिटरली, राइट? सो अब जब तुम्हारे पास 2 महीने हैं, तुम इसकी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो वैल्यू, और क्वेश्चन कर रहे हो क्या मैं कर सकता हूँ,